हाँ जी बच्चे, वेलकम बैक। We have discussed these two increment and decrement operators with their uh, two different meanings, pre-increment and post-increment. Similarly, pre-decrement and post-decrement. किसी ने कोई confusion है ना, which then let me know. We can discuss this again. If any one of you is having any problem, then let me know. Okay. Then we have conditional operator also. हुनी तक जो operators अपन discuss करे, first were arithmetic operators, then we had logical operators, then we have relational operators. All these three types of operators are binary operators. इन्हां दे विच दो arguments होंगे. Assignment operator is again binary operator, and increment and decrement, these two are unary operators. Unary operators mean इन्हां दा इक्को ही argument होएगा, इक्को ही operand होएगा. Conditional operator is a tertiary operator. इसके तीन arguments होंगे. Let us discuss it here. Let's have two values. B is equal to 20. So if A is greater than B, C out A, else C out B. So in this case, it will print B, which is 20. Now this conditional statement can be replaced with one conditional operator. What is that? It is like this. Statement, or rather it is condition, true, false. Statement 1, statement 2. It is something like this. Right? Now let's write it. A greater than B, then C out A, else C out B. So this is the condition. If it is true, this statement will be evaluated, else this statement will be executed. Okay. सर आवाज नहीं आ रही. Okay. What I am saying is, this is the condition. If this condition is true, statement 1 will be executed. If it is false, if the condition is false, then statement 2 will be executed. Now let us see this. Its effect is same. If I change it here, 30, then since A is greater, it will execute first statement. If B is greater, then it will execute second statement. Okay. I'll write the if condition once again. If A is greater than B, C out A, else C out B. I had told you that this conditional operator can be used in place of this if else structure, right? It's very easy. So if the condition is true, first statement will be executed. If it is false, then second statement will be executed. So we can replace this kind of if else with a conditional operator. But suppose the statement is like this. If A is greater than B, only then we will print A. We won't print B in any case. Can anybody tell me whether conditional operator can be used here or not?
Anybody? Can we use conditional operator in such a case or not? Yes, anybody say yes or no? What should I assume? मुस्कान, तुसी बोलो बच्चे. मुस्कान. सर नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. Okay. मनीषा बस म्यूट कर दो. मनीषा रानी, tell me whether we can use it or not. मनीषा रानी, जिसका मैं नाम ले रहे हैं, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा. इट मींस कनेक्ट करके बाकी छोड़ के बैठ गए हम कितने हो. गीतिका, रोल नंबर 12. गीतिका नहीं रिप्लेस हो सकता. ओके. बलजीत सिंह नहीं करेगा सर. नहीं करेगा. ओके. करमन, व्हाट्स अबाउट यू? व्हाट्स योर व्यू? करमन, सर नहीं हो सकता रिप्लेस. नहीं हो सकता. बच्चे देखो, कंडीशनल ऑपरेटर दे 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही कंपल्सरी हैं, नेसेसरी हैं. फर्स्ट पार्ट इज द कंडीशन जिसने इवैल्यूएट करना है. अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट होएगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट होएगी. दैट्स फाइन. पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस इफ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ if ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट. ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ a is equal to a. चल गया या नहीं? Is it working or not? बोलो, चलेगा या नहीं? सर लास्ट में ये क्या है इक्वल टू है? हाँ, ये डमी स्टेटमेंट है. इट्स काइंड ऑफ डमी स्टेटमेंट. a is equal to a का कोई मीनिंग नहीं होगा. एक वेरिएबल की वैल्यू उसी को असाइन कर दी. मेरे ख्याल से चलना चाहिए. Yes, of course it will work. We have given a dummy statement there, so it will work. ठीक है सर. Okay जी. That's all for today. लैपटॉप की भी बैटरी खत्म हो गई. We'll continue with it tomorrow. Let me just see और कौन-कौन से ऑपरेटर्स हैं. Ternary we have already discussed. This is conditional operator. Comma we तो use सर it इसका very रिजल्ट frequently. क्या आएगा? एक बार बच्चे रन करके. फर्स्ट स्टेटमेंट आ आएगा जाएगी. 30. इफ इट इज ट्रू तो वो सी आउट ए कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा. ओके. 30 है तो 30. हाँ, whatever is the value वो आ जाएगी. ओके. Comma operator, I think we need not to discuss this. Most frequently use होता है. Bitwise operators we will discuss. We'll definitely discuss these maybe tomorrow or some other day. Size of operator भी करेंगे. Okay. And new delete थोड़ा लेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे. Size of operator मैंने आपको एक बात बोली थी अभी कि डबल जो लिटरल वैल्यू होती है, रियल लिटरल वैल्यू होती है, दैट इज ट्रीटेड एज डबल. लेट्स जस्ट चेक इट. सी आउट साइज ऑफ ए. somebody was raising hand. See out size of 10. Handle. Let me add 10. Handle and see out size of 2.5. This size of operator will tell us that how much space will be occupied by a particular value. For example, this first one is a character. It will occupy 1. Second one is an integer. It will occupy 4. Third one, if it is treated as float, then it will be 4. Its size will be 4. But if it is treated as double, then its size will be 8. Let us just check it. Clear हुआ? It means 2.5 is treated as double, not as float. Clear हो गया बच्चे? फिर फ्लोट के लिए क्या टाइप करेंगे?
फ्लोट के लिए आप उसके एंड में f लिख दोगे, then it will be treated as float, and in that case its size is 4 only. I hope it's clear now. Clear है sir. Okay. Otherwise, if you are not writing f, it will be treated as double. Okay, that's all for today. We'll continue with it on maybe tomorrow. Bye. Take care. गुरदेव एंड योगेश अपने रोल नंबर्स लिखो बच्चे पहला रोल नंबर फिर नाम जिमें बाकी सब स्टूडेंट्स ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बी केयरफुल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम अटेंडेंस आप खुद लगाते हो? हाँ मैं खुद ही लगाता हूँ ओके इसकी पीपीटी और वीडियो आई विल शेयर विद यू वेरी सून